Yes. So I believe it's 4:35. We should begin. So basically, the overall construct will be of the session will be in such a way that we'll be covering few key features and benefits about NPS. What will be the account opening process? What are the key investment areas in which the investment of NPS is being done, and how what all types are currently available under NPS? What will be the exit strategy? Uh, Also, I would like to request everyone, if you have during the session any other concerns, queries, you can write them in the chat box. Few of my FSC or frontline will be able to answer the queries. Also, in case still you feel that the queries been not been addressed, you can directly unmute yourself and I'll address the query then and there only. Post the session will be having a Q&A in which one-to-one queries will be addressed. So overall NPS as a product, NPS can be seen as a two-phase product. Initially, there is an accumulation phase. Post that there is a pension phase. एनपीएस को हम एक दो फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट है एक्यूमुलेशन फेज जहां पे आप अपने एनपीएस अकाउंट में पैसा जमा करते हैं. देन देयर इज एन रिटायरमेंट फेज और पोस्ट पेंशन फेज जिसमें आपको एनपीएस के थ्रू धीरे धीरे करके पेंशन आती है. अब ये कैसे होता है इसको हम आगे आने वाली स्लाइड में समझेंगे. Before we start with the product, this is a brief history about NPS as a product. NPS was initially introduced in the year 2004. NPS पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए ही था. पोस्ट दैट विद द सक्सेस इन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इसे ऑल इंडिया सिटीजन स्कीम के लिए भी इम्प्लीमेंट किया गया एंड फॉर द कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज वेयर दे कैन प्लान फॉर देयर रिटायरमेंट थ्रू द years. To understand NPS as a product, there are few key players that need to understand to better understand NPS as a product. One is POP. POP is the entity जहां पे आप अपना NPS अकाउंट खुलवा रहे हैं. POP वही एंटिटी है जो आपके अकाउंट में कोई भी चेंजेस करवाने हैं. आपने नेम अपडेट करना है, नॉमिनी अपडेट करना है, बैंक डिटेल्स अपडेट करनी है. That you can do it with the help of POP. Currently, there are 200 entities that are working as a POP under NPS. Moving forward as a PFM. PFM is the fund manager under NPS. Currently in NPS, there are 10 fund managers. So ultimately, when you open an NPS account under a POP, these funds get transferred to a PFM who in turn manage these funds for you to give them a compounded returns over the years. CRA. Currently, जो आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं उसका एक फ्रंट एंड यूजर इंटरफेस कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो CRA प्रोवाइड कर रहा है. आप अब कभी भी देखेंगे कि जो आप एनपीएस अकाउंट ओपन करते हैं उसमें एक पैन नंबर जनरेट होता है. पैन नंबर यूजुअली 4 से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा या 9 से शुरू हो रहा होगा. दिस सिग्निफाइज दैट अ डिफरेंट सीआरए हैज बीन वर्किंग अंडर दैट पर्टिकुलर एनपीएस अकाउंट. एनपीएस अकाउंट जब आप ओपन कर रहे हैं आपको लॉग इन करना है या फिर अपनी डिटेल्स डायरेक्टली कस्टमर एंड पे चेक करनी है तो आप सीआरए के पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हैं. ट्रस्टी बैंक का बेसिक रोल है कि वो अपने अकाउंट को currently these three intermediaries के बीच अपने फंड्स को ट्रांसफर करने के लिए ट्रस्टी बैंक का यूज किया जाता है. कस्टोडियन इज द कस्टोडियन फॉर ऑल द सिक्योरिटीज दैट आर बीइंग परचेज्ड बाय फंड मैनेजर. एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर. तो जैसा कि हमने इस स्लाइड में देखा था, इनिशियली हम एनपीएस में पैसा जब जमा करते हैं एंड पोस्ट दैट जब हम रिटायरमेंट के बाद पेंशन गेन करते हैं, देन कम्स द रोल ऑफ एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर जहां हमारे को पेंशन प्रोवाइड करता है एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर. एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर हम मार्केट में करंटली कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप में एन्युटी परचेज कर सकते हैं. जरूरी नहीं कि अगर मैंने आईसीआईसीआई के थ्रू अपना एनपीएस अकाउंट खुलवाया है तो मैं आईसीआईसीआई की ही पेंशन लूं, या फिर एचडीएफसी के थ्रू अगर आपने एनपीएस अकाउंट खुलवाया है या फिर एसबीआई के थ्रू ही आप पेंशन है. ये कोई जरूरी नहीं है, आप किसी से भी पेंशन अपनी प्राप्त कर सकते हैं. एनपीएस ट्रस्ट मेनली एक्ट एज अ वॉच डॉग so to ensure that all these particular entities are up to the mark and doing their job diligently or not. Then comes the key features and benefits of NPS. NPS एक बहुत पोर्टेबल प्रोडक्ट है. इसे आप across the employer, across the location यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एम्प्लॉय का गवर्नमेंट एंटिटी यानी कि बीएसएफ, सीआईएसएफ, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वो वर्क कर रहा है एंड वहां पे एक एनपीएस अकाउंट खुला हुआ है. Now he is into an corporate life or doing a private work
and then he wants to register that particular NPS account to that particular organization, same plan will be shifted from a government employee to a private entity. Similarly, in case आप एक प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, देन आप अपने बिजनेस सेटअप करने लग जाते हैं. पोस्ट दैट अगर आप से अपने ड्यूरिंग द बिजनेस टेन्योर आप अपने एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूट करना चाहें, आप सेम एनपीएस अकाउंट में ही कंट्रीब्यूट करेंगे. सेम अकाउंट कॉर्पोरेट से रिटेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा. सिंपल. एनपीएस ओवरऑल एज अ प्रोडक्ट काफी सिंपल है. जैसे कि मैंने इनिशियल स्लाइड में बताया, इनिशियली आप कंट्रीब्यूट करेंगे, पोस्ट दैट आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन इसमें से मिला करेगी. फ्लेक्सिबिलिटी. एनपीएस एज अ प्रोडक्ट प्रोवाइड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटीज in terms of fund manager, in terms of investment choice, in terms of annuity options. यानी कि आप अपने इन्वेस्टमेंट जो आप एनपीएस में कर रहे हैं उसमें कितना डेट में डालना चाहते हैं, कितना इक्विटी में डालना चाहते हैं, ये आप खुद चूज कर सकते हैं. आप एक एक्टिव चॉइस लेना चाहते हैं, ऑटो चॉइस, जो कि मैं आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगा, वो आप चूज कर सकते हैं. पोस्ट दैट एन्युटी के टाइम भी आपके पास चॉइस रहती है कि आप किस तरह की एन्युटी लेना चाहते हैं. इधर यू वांट टू कीप अ एन्युटी फॉर योरसेल्फ, फॉर योर स्पाउस, फॉर योर चिल्ड्रन, with the return purchase, without return purchase price, it's up to you. You can choose any one of them. Then comes the low cost product. NPS की अगर आप कॉस्ट देखें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट रहती है, बट एक फंड मैनेजमेंट चार्जेस जो कि आप म्यूचुअल फंड में भी पे करते हैं, अगर आप इन यूलिप्स में इन्वेस्ट करते हैं, यूलिप्स में भी पे करते हैं, तो यूजली फंड मैनेजमेंट चार्जेस हर एक सेक्टर में डिफरेंट रहते हैं. एनपीएस के केस में वही फंड मैनेजमेंट चार्जेस 0.606% के हैं, जहां म्यूचुअल फंड के केस में वो 50 पैसा से 1.5 रुपीज तक रहते हैं, एंड यूलिप्स के केस में इवन इट क्रॉसेस 2%. टैक्स बेनिफिट्स. एनपीएस एज अ प्रोडक्ट प्रोवाइड्स मल्टीपल टैक्स बेनिफिट्स. मैं आने वाली स्लाइड्स में एक एक टैक्स बेनिफिट को कवर करूंगा. PFRDA regulated by NPS as a product is being regulated by PFRDA. जैसे कि सेबी स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, IRDA is a regulatory body for insurance as a product. वैसे ही एनपीएस का काम स्मूथली चलता रहे, विद इन द पर्व्यू, एक गवर्नमेंट पर्व्यू के अंडर चलता रहे. सो पीएफआरडी, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, विल बी द गाइडिंग बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी फॉर एनपीएस. तो टॉकिंग अबाउट द टैक्स बेनिफिट्स. सो टैक्स बेनिफिट्स को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. अनटैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल अंडर ओल्ड रिजीम, टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल अंडर न्यू रिजीम. सो डिस्कसिंग द टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल अंडर ओल्ड रिजीम. एनपीएस में एक बहुत यूनिक बेनिफिट रहता है कि अगर आप अपने एम्प्लॉयर के थ्रू एनपीएस में एम्पैनल हुए हैं, या फिर आपने अपने एम्प्लॉयर को अपने एनपीएस में कंट्रीब्यूशन के लिए कहा है, तो वो एम्प्लॉयर अप टू 10% ऑफ द बेसिक सैलरी अगर कंट्रीब्यूट करता है आपके एनपीएस अकाउंट में, दैट 10% ऑफ बेसिक सैलरी विल बी टैक्स फ्री और टैक्स डिडक्टेबल अंडर योर एनपीएस अकाउंट. सिमिलरली आप अंडर इंडिविजुअल कैपेसिटी भी एनपीएस में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. यू कैन इवन कंट्रीब्यूट some amount in under the individual capacity under various type deduction. First one is under ATCCD 1B, that is 50,000, and simple under plain ATC you can invest additional 1.5 lakh under NPS. So NPS के थ्रू अगर आप कुछ partial withdrawals भी कर सकते हैं, आने वाली स्लाइड में मैं इसके ऊपर भी डिस्कस करूंगा. So those partial withdrawals will also be tax exempted. इन केस ऑफ डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर, जो उसके नॉमिनी को अमाउंट्स मिलेंगे, जो इसके एनपीएस का लमसम मिलेगा, वो नॉमिनी के हैंड में टैक्स फ्री रहेगा. जब आप एनपीएस से एग्जिट करते हैं, एग्जिट के टाइम पे आप मैक्सिमम 60% ऑफ द कॉर्पस लमसम ले सकते हैं, एंड दैट 60% ऑफ द लमसम विल बी टैक्स फ्री इन द हैंड ऑफ सब्सक्राइबर. सेकेंडली, जब आप 40% एन्युटी में ले रहे हैं, एन्युटी इन द हैंड ऑफ सब्सक्राइबर विल बी टैक्सेबल, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑप्शन अवेल किया है एन्युटी के केस में, दैट 40% इन द हैंड ऑफ नॉमिनी विल बी टैक्स exempted अंडर सेक्शन 1010D. नाउ कमिंग टू द न्यू regime as a topic. Out of all these options, few of the benefits are still available under new regime. We'll discuss in detail. So the best and the most interesting part about NPS is that NPS is the only one of the very few products that are providing benefits of tax reduction under new regime also. So the contribution made by the employer under section 80CCD 2 will be available to the subscriber under new regime also. And इसका अपर कैपिंग है अप्रोक्सीमेटली 7.5 lakhs तक. यानी कि अगर मेरा बेसिक सैलरी से 4 लाख रुपीज है, एंड मेरा एम्प्लॉयर मेरा बेसिक सैलरी 40 लाख रुपीज है, एंड मेरा एम्प्लॉयर 4 लाख रुपीज मेरे एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो,
मैं 4 लाख रुपीज टैक्स रिडक्शन ले सकता हूँ इवन अंडर न्यू रिजीम. This 80CCD1B and ATC won't be available in new regime, but still the partial withdrawal will be available. That is the amount that I want to withdraw from NPS will be available to the subscriber under new regime. The funds received with the nominee will be available under the new regime. 60% lump sum will be available to the subscriber tax-free in the hands of subscriber under new regime, and similarly 40% will also be tax-free under the new regime also. So in order to distinguish the overall tax reduction part, there are 3 different tax reduction. One is employer contribution and the other is individual contribution. Under the employer contribution, 10% of the basic salary will be tax deductible, and the remaining is 50,000 under 80CCD1B and 1.5 lakh under ATC. मेन चीज जो आपको इसमें नोट करने वाली है वो है 7.5 lakhs के अगेंस्ट आपका मैक्सिमम कैपिंग है फॉर एनपीएस, पीपीएफ, एनपीएस, एसए दैट इज सुपरएनुएशन एंड पीएफ. यानी कि आपका सम टोटल ऑफ ऑल दीज 3 इंस्ट्रूमेंट्स द मैक्सिमम टैक्स रिडक्शन दैट यू कैन अवेल इज 7.5 lakhs. Moving forward, so this is a rough example to understand what will be the difference of gaining tax benefit under NPS and for the subscriber who doesn't has NPS in NPS account. In this particular scenario, so किसी की बेसिक सैलरी अगर 4,65,000 है, जिसके पास NPS है, in that particular case he can contribute 46,500 rupees under the NPS by the employer and avail additional tax benefit on it. For the rest of the case scenarios, the tax benefit will be same. To understand it in detail, these will be the tax benefit differences. So एडिशनली मैं पीएफ में अगर 55,800 रुपीज डाल रहा हूँ, एनपीएस के केस में मैं एडिशनल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन गेन कर सकता हूँ, एटीसी का बेनिफिट गेन कर सकता हूँ, 94,000 मैं इस पर्टिकुलर केस में भी गेन कर सकता हूँ. बट विदाउट एनपीएस मैं मैक्सिमम टैक्स रिडक्शन जो ले रहा हूँ 1.5 लाख की ले रहा हूँ, बट विद एनपीएस मैं मैक्सिमम टैक्स रिडक्शन जो ले रहा हूँ 2,52,300 रुपीज की ले रहा हूँ. नाउ टॉकिंग अबाउट द रिटर्न्स. एनपीएस का जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट क्लास में इन्वेस्ट हो रहा है. वन इज गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सेकंड इज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, थर्ड इज इक्विटी एंड फोर्थ वन इज ऑल्टरनेट बॉन्ड्स. तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दीज इन डिटेल, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में रिलेटिवली रिस्क अमाउंट लेस होता है, रिटर्न्स रिलेटिवली ज्यादा रहते हैं. कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के केस में रिटर्न्स भी मीडियम रिटर्न्स, मीडियम रिस्क. इक्विटी के केस में रिस्क भी ज्यादा रहेगा, रिटर्न्स भी थोड़े ज्यादा रहेंगे. Alternate assets, it is relatively a new asset class and hence the capping for the investment under the NPS is capped at 5%. That means NPS के केस में मैक्सिमम आप alternate assets में 5% इन्वेस्ट कर सकते हो. Similarly, equity के केस में मैक्सिमम आप 75% ही इन्वेस्ट कर सकते हो in tier 1 account. इन्वेस्टमेंट चॉइसेस जो हमारे पास अवेलेबल रहती है, वन इज एक्टिव चॉइस एंड सेकेंड वन इज द ऑटो चॉइस. एक्टिव चॉइस में मेरे पास चॉइस रहती है कि मैं अपना इक्विटी, डेट या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का कंपोनेंट खुद डिसाइड कर सकता हूँ. मैंने 75% अगर इसे इक्विटी को दे दिया, मैं 10% गवर्नमेंट बॉन्ड को दे सकता हूँ, 15% कॉर्पोरेट बॉन्ड को दे सकता हूँ. इट्स अप टू मी. प्लस एडिशनली मैं विद इन 1 ईयर इसको 4 टाइम्स चेंज भी कर सकता हूँ. इट्स अप टू मी वेदर आई वांट टू कीप द इक्विटी क्लास व्हाटएवर परसेंटेज आई वांट. इन केस ऑफ ऑटो चॉइस ये ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है विद माय एज. फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ there are 3 different investment options that are available. Just give me a moment, I'll explain it in with the help of slide. Yeah, so in case of auto choice, there are 3 different kind of asset class that are available. One is aggressive, second one is moderate, third one is conservative. In case of aggressive choice, initially equity component will be 75%, and over the years, if you can see, the equity component will keep on falling. By the age you reach 55, the equity component will drop to 15%. While in case of moderate choice, the equity component till the age of 35 will be 50%. Post that, every subsequent year, equity component will keep on reducing by 2%,
and then by the age of 55 it will be stagnated at 10%, and the government portion will increase from 20% to 80%. And same is the case with conservative, where the equity is only 25%, and major contribution is being done in the government bonds and corporate bonds. By the time you reach is 55 or plus, your government bond component will be 90%. So the best part about this auto choice is that जो तो पैसिव इन्वेस्टर्स हैं वो पैसिवली एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऑटो चॉइस चूज कर सकते हैं, वर्सेस इन केस अगर आप एक्टिवली मार्केट्स को वॉच कर रहे हैं, if you know how to time the market, you can choose active choice and keep your equity component, or gain the flexibility of equity and debt component. Now talk about the returns of NPS. NPS की returns all over the fund managers available रहते हैं NPS Trust की website पे. You can easily access this NPS Trust website and weekly basis पे ये update होते रहते हैं. This website will provide 1 year returns, 3 years returns, 5 years return, 10 years return, and since inception returns. You can click on this particular link and directly access this particular website. So talking about the comparison, मैंने ये आज का ही screenshot है. So this is the equity return comparison of 1 year of equity tier 1 account. In this we can see that ICICI has been providing 11.65% in last 1 year, while other benchmark is providing at 8.6. Other fund managers like Kotak Mahindra is at 11.24. HDFC is at say 9.14%. So the ICICI in terms of returns is providing an additional 2 to 3 basis points difference, 2% or 3% difference compared with the rest of the players in 1 year horizon. In 3 year horizon, we are relatively better compared with the most of the peers. And while ICICI in 2 years compounded is providing at 20.73%. Players like HDFC is providing at 19.73. LIC is at 20.86. SBI is at 19.02. So the reason why Tata and Axis Bank is not there in this next slide is that Tata and Axis is relatively new in the PFM industry and they have only 1 year of experience in fund management as an NPS. So comparing the 10 years horizon, while ICICI is providing a return of 13.1%, HDFC is at 13.39, Kotak Mahindra is at 13.15, LIC is at 12.18. So comparing the long-term horizon of corporate bonds returns, these are the overall fund returns of NPS as a product, PAN fund managers. Overall, you can see that the returns are relatively same, around 7.5% to 7.3%. In 3 year horizon, because of post-COVID, the returns have fallen drastically because of the change in repo rate. But in 1 year horizon, they have relatively recovered. Same overall in 10 years, we can observe that the returns in corporate bonds are around 9% to 8%. Same is the case with the government bonds, where post-COVID, the returns were relatively less. But in the past 1 year, the returns have been improved. Where in last 1 year, we have been providing around 9.5% to 9.8%. And overall in 10 year horizon, the average returns is again from 9% to 9.5%. So liquidity. So most of the times the question from advisors and the clients has been that NPS में partial withdrawal या फिर पैसे निकालने का option नहीं रहता है. So this is one of the key benefit of NPS is that after 3 years of account opening, आप NPS में से partial withdrawal opt कर सकते हैं. Maximum that you can withdraw is 25% of the contribution made. And how many times you can make this particular partial withdrawal is 3 times during the whole life of NPS. यानी कि अगर मैंने आज NPS अकाउंट खुलवाया है, 3 साल बाद 3 साल में मैंने तकरीबन 1.5 लाख रुपीस अगर मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, सपोज दैट मैं 25% ऑफ 1.5 लाख विड्रॉ कर सकता हूँ. एंड ऐसे विड्रॉस टोटल में 3 टाइम्स ही कर सकता हूँ ओवरऑल इन द NPS, ओवरऑल लाइफ ऑफ NPS एज अ प्रोडक्ट, जब तक मैं NPS अकाउंट से एग्जिट नहीं कर देता. NPS अकाउंट के केस में एग्जिट कैसे किया जाता है? एग्जिट के काफी सिनेरियोज हैं. In case you have any questions, concern, you can write them in the chat box. My team will be trying to answer the same.
अगर कोई आपको ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन भी अगर क्वेश्चन कंसर्न्स रहते हैं, आप अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एग्जिट के 3 सिनेरियोज रहते हैं। वन इज द केस ऑफ 60 दैट इज सुपर एनुएशन एज, अदर इज 60 से पहले, और 60 से अगर मैं पहले एग्जिट करना चाहूँ, थर्ड इन केस ऑफ डेथ। अगर मैं 60 या 60 के बाद एग्जिट करता हूँ, इन दैट सिनेरियो मिनिमम 40% ऑफ द कॉर्पस आई हैव टू प्रोवाइड टू एन्युटी। यानी कि अगर मेरा से 1 CR का कॉर्पस एक्यूमुलेट हुआ है, so out of this 1 CR minimum 40% need to be contributed towards annuity, जहां से मुझे पेंशन आती रहेगी। मैक्सिमम 60% मैं लमसम विड्रॉ कर सकता हूं, एंड दैट 60% लमसम विल बी टैक्स फ्री इन द हैंड ऑफ सब्सक्राइबर। अब इसमें एक लूपहोल है, अगर किसी सब्सक्राइबर का टोटल कॉर्पस वैल्यू 5 लाख रुपीज या उससे कम है, तो सारा का सारा अमाउंट लमसम विड्रॉ कर सकता है, एंड दैट विल बी टैक्स फ्री इन द हैंड ऑफ सब्सक्राइबर। So how we can use this particular benefit for the subscriber that are above 60 is that suppose मैं किसी सब्सक्राइबर का अकाउंट 60 की एज में खोल रहा हूँ, एंड एट द एज ऑफ 65 अगर उनके कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम मैं जितना करूंगा रिटेल के केस में 50,000 पर ईयर करूंगा, बाय द एज 65 उनका जो कॉर्पस रहा वो 5 लाख रुपीज से हमेशा कम ही रहेगा। अगर मैं चाहूँ पोस्ट दैट मैं उन 5 सालों में एनपीएस के टैक्स बेनिफिट्स अवेल कर सकता हूँ, एंड देन आई कैन मेक अ लमसम टैक्स फ्री विड्रॉल फ्रॉम एनपीएस। पोस्ट दैट आई कैन अगेन ओपन एन एनपीएस अकाउंट। सेम कैन बी डन इन द केस ऑफ बिफोर द एज ऑफ 60, एग्जिट बिफोर द एज ऑफ 60। इसमें आगे एक्सप्लेन करता हूँ। सो एनपीएस के केस में मैं 5 साल बाद एनपीएस से एग्जिट कर सकता हूँ। अगर मेरी एज 60 से कम है, इन दैट सिनेरियो मिनिमम 80% ऑफ द कॉर्पस मुझे पेंशन यानी एन्युटी के लिए देना पड़ेगा। मैक्सिमम मैं 20% ही लमसम विड्रॉ कर सकता हूँ। बट अगर मेरा कॉर्पस वैल्यू 2.5 लाख से कम है, देन इन दैट केस फुल अमाउंट विल बी अवेलेबल टू विड्रॉल इन द हैंड ऑफ सब्सक्राइबर टैक्स फ्री। यानी कि अगर किसी सब्सक्राइबर ने 3 साल में 50,000 कंट्रीब्यूट किया है, एंड बाय 5th ईयर इफ ही डजंट कंट्रीब्यूट, the corpus value will turn out to be near about by 2.5 lakhs, more or less उतनी ही रहेगी। एंड इन दैट सिनेरियो अगर उस 5 साल बाद वो एग्जिट करना चाहता है, तो वो सारा का सारा अमाउंट लमसम टैक्स फ्री विड्रॉल कर सकता है, एंड दिस अमाउंट विल बी अवेलेबल टू द सब्सक्राइबर। इन केस ऑफ डेथ, तो अगर कोई सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है, इन दैट सिनेरियो एनपीएस में ऑप्शन है कि वो उसके नॉमिनी एन्युटी भी ऑप्ट कर सकते हैं, और दे कैन take in a 100% lump sum tax free to the nominee of the subscriber. So types of NPS account. Currently there are 2 types of NPS account that are available: Tier 1 account and Tier 2 account. All the benefits that we discussed during the presentation, tax benefits that we discussed were available for Tier 1 account. Tier 2 account में कोई भी tax benefit available नहीं है. It's just for the sake of investment, and it's more or less like a savings account or a mutual fund, investment in mutual fund where we can contribute today and withdraw after 2 to 3 days. इन Tier 1 अकाउंट जो भी आप एनपीएस में अकाउंट ओपन कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली Tier 1 अकाउंट ओपन कर रहे हैं। दैट्स व्हाई एनपीएस, अगर आप कह रहे हैं किसी को कि आपके पास एनपीएस अकाउंट है, दैट मींस Tier 1 अकाउंट इज मैंडेटरी फॉर एनपीएस, इट्स अ बाय डिफॉल्ट, and it's up to the subscriber whether he wants to open Tier 2 account or not. Withdrawals, एनपीएस के Tier 1 अकाउंट में विड्रॉल्स आर रिस्ट्रिक्टेड, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि पार्शियल विड्रॉल्स में स्पेसिफिक केसेस में ही मैं अमाउंट विड्रॉ कर सकता हूं। इन Tier 2 there is no restriction on withdrawals, and there is a complete flexibility to withdraw the amount from NPS account. Tax benefits, all the tax benefits that were discussed were of Tier 1 account. In Tier 2 there are no tax benefits available. अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे एनपीएस के Tier 1 अकाउंट में मिनिमम 500 रुपीज से कॉन्ट्रीब्यूशन करना मैंडेटरी है, वर्सेस एनपीएस के Tier 2 अकाउंट में मिनिमम 1000 रुपीज से कॉन्ट्रीब्यूशन करना मैंडेटरी है। बाय दिस कॉन्ट्रीब्यूशन आई मीन ये पैसा आपके एनपीएस अकाउंट में ही रिफ्लेक्ट करेगा। दीज आर नॉट द चार्जेस बट द कॉन्ट्रीब्यूशन दैट यू नीड टू मेक। एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, एनपीएस अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए साल में आपको कम से कम Tier 1 में 1000 रुपीज कंट्रीब्यूट करना जरूरी है। काफी आपके क्लाइंट्स होंगे जिनका पहले से एनपीएस अकाउंट अगर चल रहा है,
उनका अगर फ्रीज हुआ है तो मेन रीजन नॉन कंट्रीब्यूशन ही रहता है। आप उनके अकाउंट में 1000 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करवा के उनका कंट्रीब्यूशन एक्टिव कर सकते हैं, उनका अकाउंट एक्टिव कर सकते हैं। टायर 2 के केस में कंट्रीब्यूशन अमाउंट मिनिमम कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्यू फ्लेक्सिबिलिटीज एंड फीचर्स ऑफ एनपीएस। सो फ्री स्विचेस, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि आप स्विच भी कर सकते हैं, इक्विटी कंपोनेंट चेंज कर सकते हैं, एंड दीज स्विचेस डज नॉट इनकॉर्पोरेट एनी चार्जेस फॉर द सब्सक्राइबर। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे लग रहा है कि इक्विटी मार्केट्स आर करंटली एट सैचुरेटेड पॉइंट, तो मैं इक्विटी से डेट में शिफ्ट कर सकता हूं, एंड फॉर दैट देयर विल बी नो फंड मैनेजमेंट चार्जेस और switching charges for the subscriber or the agent. So change between government and corporate sector already discussed. You can select the annuity service provider also. Select lump sum amount. So basically lump sum amount is capped at 60%. It's up to the subscriber whether he want to choose 60% or if he want to choose less component as a lump sum, he can choose for that. Partial withdrawals are available 3 times. Minimum contribution, opening and tier 1 and tier 2 account already discussed. Systematic withdrawal option. So this is the new entrant that is being available by PFRDA under NSGL as a CRA. इसमें आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि आप you will be stay put invested into the NPS account and you can gain the benefit of lump sum out, gain the benefit of annuity from the units. So basically अगर मेरे कॉर्पस 1 CR का कॉर्पस है and ultimately I want annuity post the age of 60, my 1 CR corpus, initially हमारे पास ऑप्शन सिर्फ अवेलेबल ऑप्शन था कि मैं एन्यूटी सर्विस प्रोवाइडर के पास जाकर उन्हें अपना 1 CR प्रोवाइड कर दूं। पोस्ट दैट दे विल बी प्रोवाइडिंग अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एन्यूटी दैट विल बी वेरिंग फ्रॉम 6% to 7% or 8% based on the plan that you are choosing. Now with SWP you have an option to choose the amount that you want to withdraw from your NPS account and the years that you want to stay invested into the NPS. So for example, मैं चाहता हूँ अगर मैंने 1 करोड़ रुपए NPS में जमा है, 60 के बाद मैं एग्जिट करना चाहता हूँ and I want 10,000 rupees or say 1 lakh rupees as a monthly pension, I can opt for that. Post that I'll be choosing the years for which I want to stay invested, and post that the lump sum amount will be credited to the NPS subscriber account. यानी कि मैं initial years में NPS में invested भी रहूंगा and post that इसमें मुझे पेंशन भी आती रहेगी जब मेरा कॉर्पस खत्म हो जाएगा या फिर मेरा टेन्योर खत्म हो जाएगा। अगर टेन्योर खत्म हो जाता है तो मेरा फंड वैल्यू वापस आ जाएगा, जितना कॉर्पस अमाउंट है वो लंप सम मिल जाएगा। अगर मेरा कॉर्पस खत्म हो जाता है, पोस्ट दैट आई वोंट बी गेटिंग एनी एन्यूटी आउट ऑफ इट। अर्ली एग्जिट आफ्टर 5 years, this is the plain simple exit option that is currently available to the subscriber. No upper limit to invest. So currently NPS में there is no upper limit. Subscriber can invest 1 crore at the time of account opening also. So currently there is no upper limit for investment under NPS. Continuation of NPS account. So NPS account आप 70 की एज तक खोल सकते हैं एंड इस अकाउंट को आप 75 की एज तक कंटिन्यू कर सकते हैं। So काफी सब्सक्राइबर्स का ये कंसर्न रहता है कि आप 60 के बाद NPS खोल ही नहीं सकते, जबकि ये गलत है। आप 70 की एज तक NPS अकाउंट खोल सकते हैं। Tax benefits have already been discussed, and again the option to switch and continuation of fund manager is already been discussed. Deferment of withdrawals. So अगर मैं 60 की एज में एग्जिट नहीं करना चाहता तो मैं इसको अपने NPS अकाउंट कंटिन्यू कर सकता हूँ। कब तक कंटिन्यू कर सकता हूँ? till the age of 75. There are multiple deferment options in which मैं खाली अपनी एन्युटी को डेफर कर दूं, एंड सेकंड ऑप्शन इज मैं अपना एग्जिट ही ना करूं, एग्जिट ही एट द एज ऑफ 75 करूं, एंड थर्ड ऑप्शन इज SWP which have been discussed. So चार्जेस एनपीएस के केस में बहुत मिनिमल चार्जेस रहते हैं। एक अकाउंट ओपनिंग के रहते हैं। अकाउंट ओपनिंग के टर्म्स में 400 रुपीज विल बी द अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। पोस्ट दैट जब भी आप एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूट करते हैं 50 पैसा इज द कंट्रीब्यूशन चार्जेस दैट आर कैप्ड बाय PFRDA। इसमें मिनिमम 30 रुपीज विल बी चार्ज एंड मैक्सिमम इसकी कैपिंग है 25,000 रुपीज। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन चार्जेस, यानी कि अगर किसी ने अपना नाम, नॉमिनी, एड्रेस अपडेट किया है, बैंक डिटेल्स अपडेट किया है, उस केस में ट्रांजैक्शन नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन चार्जेस के 30 रुपीज डिडक्ट किए जाते हैं सीआरए के द्वारा। एंड दीज आर द बेसिक सीआरए चार्जेस एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग। सो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस क्या है? आप सब एडवाइजर्स के पास एक अकाउंट ओपनिंग लिंक आया होगा। करंटली अकाउंट ओपनिंग आधार बेस्ड और पैन बेस्ड दोनों है।
इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे आप पैन नंबर डालेंगे, पैन नंबर के थ्रू एनालाइज किया जाएगा कि पहले से इस सब्सक्राइबर का एनपीएस अकाउंट तो नहीं है। Post that there are basic form KYC details that are required. जब आप आधार नंबर डालेंगे, most of the KYC details will be fetched from the subscribers KYC. In terms of documents that are needed to be uploaded are basic bank details, and in terms of upload, signature, specimen signature of the subscriber, and photograph of the subscriber. That's it. The rest of the details are automatically fetched by the KYC. Few details that you require from the subscriber end is that basic parents details, mother father details, nominee details, whom he want to make the nominee, the amount of component he want to invest in equity, amount he want to invest in government bonds, kind of asset allocation that he wants to make, and all these details will be done during the account opening journey only. Post that there'll be a payment page from which you can directly contribute into the NPS account. Another additional benefit of being partnered with us is that we have an active agent app. Using that, you can directly access your NPS overall business of NPS. In this, currently we are providing the update of accounts that have been opened, your account opening link. And in case you already, any of your clients already opened an NPS account, you can shift those NPS account and get them mapped using that particular agent app. Also, various access to various links like the account opening link, SIP link, and contribution link. Now moving to the calculator page. More or less that was it from my end. Now I'll be sharing an interesting calculator using which we can calculate the NPS corpus of the NPS that the subscriber can avail. So here, this is the ICICI calculator, ICICI Prudential Funds pension calculator. In this, my current age is say 30, and I am planning to retire at the age of 60. So ultimately, my investment period will be 30 years. And currently, I am investing 5,000 rupees into my NPS account on a monthly basis. And since I am highly bullish on equity, I am keeping it at 11%. But if you can see here that NPS returns overall has been 10% since inception. तो अगर मैं गवर्नमेंट बॉन्ड भी चूज करता हूँ अगर मैं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के टाइम पे, तो ओवरऑल मोर और लेस लॉन्ग टर्म होराइजन में 10% एवरेज रिटर्न मिल जाता है. Still, I am taking only 11%. So if we see here that total wealth generated will be 1 CR 40 lakhs 22,599 rupees, and out of this total wealth generated, my tax saving, the amount that I have saved while contributing into my NPS account is that 5 lakh 56,200 rupees is the amount that I have saved in terms of paying tax to the government. So if I want to change this particular returns, it will automatically keep on increasing the overall wealth generated. So if you can see, when I increase the returns, my tax saving won't increase simply because my contribution, I'm tax saving on my amount that has been contributed into the NPS account. And now is the percentage of wealth that I want to invest in annuity plans. So simply this is being capped at 80%. That means if I'm getting a return of say 12%, and I invest out of the 1.7 lakh, 1 crore 70 lakh rupees, if I invest 80% in annuity, the pension amount invested in annuity will be 1 crore 30 lakh rupees, 39 lakh rupees, and simply I'll be getting around 30 lakh rupees as a lump sum amount. And out of this 1 crore 40 lakh rupees, my monthly pension till life will be around 1 lakh rupees or 93,000 rupees, because the current annuity rates are around 8.5, 7.5 to 8.5 based on the type of product I am choosing. So using this calculator, you can help your subscriber understand the various benefits of NPS and explain in details that what will be the amount of corpus that they will be able to build with NPS as a product. So that was it from my end. Now we'll be moving to the Q&A part. In case anyone has any questions, you can raise your hand and we'll be trying to answer the questions.
Anyone having any questions? Where can I get the plan shifting process step by step? Any document is available? Yes, sir. So the shifting process tomorrow also we'll be having a session specifically for shifting process. But you can connect with your FSC. She or she will be providing you the step-by-step video journey in which you can execute the plan shifting process. Okay, sir. Thank you. Tomorrow also we'll be having a session on NPS account opening and shifting process. Any other queries? Good evening, sir. Good evening. Sir, my query is from where we can track our business. Maybe using that particular agent app that I shared. This agent app you can track your business. Also, the your frontline will be able to provide you with the account details like an overall number of accounts that have been opened under your account under your business code, and in case of shifted, the same MIS will be provided by your frontline also. In case these details are not available on agent app, more or less they will be available on the agent app. Excuse me, sir. Ji sir. What is the brokerage structure for NPS count for us? So currently, this particular session is being provided for YouTube also. So for brokerage, I'll be handling the queries one to one, or you can individually discuss with the frontline for brokerage. Okay. Any other product related queries, if anyone has? I believe that was it from my end. And in case anyone has any query, you can write them in the chat box. Also, for those who are viewing this video